Hi all, how are you? I think you all are very good, and you are doing so much great. Today, my second lecture of convex optimization. Today, I will tell you the definition of convex optimization and the convex conjugate. First of all, if we have a function f. If we have a function f from set of x alternative to the interval minus infinity to infinity, and we have the y-intercept mx plus q. You know the definition of y-intercept in the previous classes, and you know that m is the slope and q is some constant. We can also write y is equal to fx. We can doing this thing for the definition of convex conjugate. It's an easy thing to give the definition of convex conjugate. And if we take q as alpha and m slope is equal to we will take m is equal to the slope. You know this definition of slope in calculus and other thing we take we have the graph and we have the 2 points like this, and this is like x1 y1 x2 y2, and we find the slope of this line segment like this. M is equal to y2 minus y1 and x2 minus x1. And there is another also way we take m is equal to tan theta. If we have some angle, we can find the slope m is equal to m theta. Okay. Now we can take mx is equal to the inner product of, we can also write m is equal to x star. M is equal to x star. We also assume that m is equal to x star, so we can also write like this. Mx is equal to this, the inner product of x star dot x. We can write it in this form. Mx is equal to this. Now we can put in the equation the value of y is equal to mx, and you only interchange the things, and we will take plus alpha in this situation. Now we can also write this like this: fx minus alpha is equal to x star x x1 x. You know, we can also rearrange the things, and if we take something from this side to the other side, we can write another we can write change the sign. If we change the position of one thing from here to the other side, we can change the sign. This is the basic thing we all know. Now we can also write like this: fx minus x star x is equal to alpha. We can also rearrange it like this. Now if we have a y-intercept like that, f that contain in the function of f, if and only if we have some such type of equality, like fx minus smaller than or equal to alpha,
if the y-intercept f is contained in the function f if and only if the y-intercept minus x star comma the inner product of x star and x is smaller than or equal to the alpha. Now we in calculus we can write mx is equal to xm. We can change it like this, but for the inner product, like if we have x star comma x, we can't write it like this. We can't interchange it like this. Okay, this is not equal in the inner product of x and x star and x star comma x. This is not equal in general, so we have we can define it like this, that if let x be the Banach space, you know what is Banach space, the complete norm space, and you know the definition of norm space from functional analysis. I am not going to again I am not going to tell you. You will read the previous course of functional analysis to read this. Now we have the dual space x star is its dual space. What is dual space? The collection of linear functionals is called the dual space. Collection of linear function, set of collection of linear function is called its dual space. Now we have the bidual. The dual of x prime endowed with his norm as dual space, then there exists the isometric embedding from the dual space x to the bidual space, defined as follows. Like we can also write x star like this, jx comma x star. Then this j is the isometric embedding from the Banach space x to the bidual of it, and we can write it like this, defined as follows: for every x belongs to capital X and every x slope belongs to the x prime or dual, J is trivially linear. J क्या है? ट्रिवली लीनियर है हमारे पास कोई बनाप स्पेस है x, उसका कोई बाई डुअल स्पेस हमने लिया है और उसका ही हमने बाई डुअल ले लिया है, और हमारे पास एक आइसोमेट्रिक एम्बेडिंग है j जो स्पेस x से हमारे पास बाई डुअल में जा रही है, तो हम इसके इनर प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं। और j है क्योंकि हमारे पास ट्रिवली लीनियर है, तो जो नॉर्म ऑफ jx in bidual is equal to the norm of x. If j is surjective, then the space x is called reflexive. Reflexives mean that it is linearly subjective to its bidual. ये linearly जो है आइसोमेट्रिक है बाइडुअल के साथ। तो अगर हमारे पास हान बनाप थ्योरम होते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ होगा फंक्शनल एनालिसिस में हान बनाप थ्योरम।
So by Hahn-Banach theorem, if J is surjective, then अगर J is surjective, if say J is subjective, then the Banach space X is reflexive. ये हमने हान-बनाप थ्योरम लिया है फंक्शनल एनालिसिस के से, उससे हमने ये डेफिनेशंस प्रूव की हैं. Okay, I think you will get the general idea for this convex conjugate. Now we will have the function f, and we have the slope that belongs to the dual space of x, and alpha belongs to the real space R. अल्फा जो है हमारे पास कोई रियल नंबर है जो रियल स्पेस R में से है. The continuous affine function fx is equal to the inner product of x star x minus alpha is everywhere less than f. X belongs to x. We have this. I tell you before that how it came. Now we will study what is affine function, because we use it many times. A function which is composed of linear function and a constant is called affine function. This is the affine function in 1D. Like, it is composed with the linear function plus a constant, and its graph is straight line. Like, we also have the affine function in 2D like this. We have ax plus by plus c, and this is the linear function, and this is some constant. And the function which is composed of some linear function and some constant is called affine functions. Like, it is also, we can say that it is also a affine combination. Affine functions are only functions that are convex and concave. They are both. Okay. Now I will tell you what is minorant. If we have a function fx and we have a function gx, and we have the function f is smaller than or equal to gx, then we will say that f is the minorant of g. Like, we will take another two functions like hx is smaller than equal to jx. We take two functions, we can say h is the minorant of j. जो भी चीज़ जो है smaller than or equal to से पीछे है ना, उसे हम कहेंगे h is the minorant of j. Okay, I think you will understand it now. And let function f is from space x to the interval minus infinity to infinity. We have the slope that belongs to the dual, and we have alpha belongs to R. Define a convex conjugate. हम convex conjugate बताने लगे हैं क्या होता है. हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे फंक्शन का, और दैट विल बिलोंग्स फ्रॉम डुअल ऑफ एक्स टू minus infinity to infinity of a function f for all x slope belongs to the dual. अब हमें convex conjugate को हम इस तरह, हमने ये पहले निकाला था डेफिनेशन, पहले जो निकाली थी, हम उसी को चलाएंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है और हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं एक्स स्टार कॉमा एक्स, ये हम इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस अफाइन फंक्शन.
हम जानते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये एक अफाइन फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ये एक लीनियर फंक्शन है ये वाला, और ये हमारे पास सम कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अफाइन कंटिन्यूअस अफाइन फंक्शन। अब हम इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो कैसे हो जाएगा, एफ स्टार, और हमारे पास ये स्लोप आ गई। इसको अगर हम सुप्रीमम ले लें, x belongs to capital N, माइनस एफ एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, ये बताएं आप खुद ही। ये हमारे पास कन्वेक्स कॉन्जुगेट आ गया। अगर हम किसी चीज़ का मतलब द पॉइंट वाइज सुप्रीमम ऑफ अफाइन फंक्शंस इज कॉल्ड कन्वेक्स कॉन्जुगेट, और f is convex because it is the point wise supremum of a convex function। so हम इसे कहेंगे कि f जो है हमारे पास convex है, तो ये क्योंकि हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास एक पॉइंट वाइज सुप्रीमम है कन्वेक्स फंक्शन का। तो हमने पहले क्या फाइंड किया था कि देखिए, हमने फाइंड किया था ना ये हमने फाइंड किया था कि जो है हमारे पास ये जो फंक्शन है ये स्मॉल एफ एक्स माइनस दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये वाली जो चीज़ है, ये सारी चीज़ हमारे पास आ रही है फंक्शन के कॉन्जुगेट के इक्वल। तो हम फंक्शन के कॉन्जुगेट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू अल्फा ले लेंगे। लाइक हमारे पास अगर जो है ये स्मॉलर देन और इक्वल टू अल्फा है, तो हमने ये किस चीज़ की इक्वल है, देखें ये कन्वेक्स कॉन्जुगेट के। हम इसको इस तरह में तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। नोट दैट एफ conjugate is smaller than or equal to the alpha if the continuous affine function is everywhere less than f। अगर continuous affine function जो है ये हर जगह पे फंक्शन से छोटा हो, is everywhere less than f। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये हमने ले लिया है। अब हम आगे जाएंगे कि हमारे पास जो ये है एफ कॉन्जुगेट और अल्फा जो है वो बिलोंग करता है एपिग्राफ ऑफ एफ कॉन्जुगेट के। हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास इसके बिलोंग करे, इफ एंड ओनली इफ epigraph of f is contained in the epigraph of where ये हमारे पास कंटिन्यूअस अफाइन फंक्शन है जो इसके इक्वल है, ठीक है। आई थिंक आपको लिटिल बिट पता चल गया होगा। हम अच्छा जी चलें, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कन्वेक्स कॉन्जुगेट की। ये देखें, ये मैंने किया हुआ है, ये किस तरह से आया है। ये क्योंकि मैंने सर से पूछा था कि आपने तो ये हमें सिर्फ डायरेक्टली बता दिया है, यू टेल अस डायरेक्टली दैट दिस इज़ लाइक दिस, व्हाट इज़ द मेन कोर about this definition। so he tell me that I solve it like this, that alpha is greater than equal to we note that alpha is greater than or equal to f conjugate and it is greater than or equal to this one।
Okay, then we can interchange the value like this. fx is greater than or equal to this, because ये और ये इसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये इसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो चीज़ थी ना, ये वाला जो है, सिर्फ उसी को लेके ना, तो इसको उन्होंने अल्फ़ा के साथ मतलब उस तरफ ले गए हैं और एफ एक्स को इधर ले आए हैं। तो एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, हम उसको जो है, इसको जो है ना, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्टार अल्फ़ा एक्स, इस फंक्शन को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इफ़ एंड ओनली एपिग्राफ ऑफ एफ इज़ कंटेन इन इक्वल टू एपिग्राफ ऑफ ये दिस वन। हमने ये इस तरह से फाइंड कर लिया है। ठीक है, आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हम 2-3 एग्जांपल करेंगे कन्वेक्स कॉन्जुगेट की। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फर्स्ट आई विल डू द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्स कॉन्जुगेट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, हमारे पास अब एग्जाम्पल है। हमने क्या किया है, हमारे पास कन्वेक्स कॉन्जुगेट आ गया ना, अब हमने चीज़ों का कन्वेक्स कॉन्जुगेट निकालना है। हम किस तरह निकालेंगे, ये देखें, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। ये हमारे पास कन्वेक्स कॉन्जुगेट एक्सपोनेंशियल एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने क्या, वी हैव टू प्रूव दैट द कन्वेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एंड इज डिफाइंड एज, हमारे पास जो इसका कॉन्जुगेट है वो जो है प्लस इन्फिनिटी है इफ y इज स्मॉलर देन 0, और हमारे पास जी जो कन्वेक्स कॉन्जुगेट है उसकी अगर स्लोप 0 हो तो हमारे पास we have the convex conjugate 0, and if the convex conjugate convex conjugate is again this, if we have the condition that y is greater than 0, then we have the convex conjugate y log y minus 1. ठीक है, ये उन्होंने क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट इफ देयर इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स देन इट्स कन्वेक्स कॉन्जुगेट इज प्लस इन्फिनिटी इफ y is smaller than 0, and the convex conjugate is 0 if the slope is 0, and the convex conjugate is y log y minus 1 if y is greater than 0. We have these three possibilities of convex conjugate, and we have, now I will tell you how I do this. ठीक है, हाँ, अब हमने कोई फिक्स y belongs to R and consider, हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है dy x is equal to, हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना कन्वेक्स कॉन्जुगेट की, कि हमारे पास वो इनर प्रोडक्ट होता है माइनस सम बाय इंटरसेप्ट, तो हम उसी को जो है ना यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने कन्वेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो उसी की डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे ना। तो ये वाई एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है, हमने इस तरह से लिख दिया। वी नो दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, हमने इधर क्या किया, y इज इक्वल टू, हमने स्लोप को जो है ना y के इक्वल ले लिया, इस तरह जो है ये इनर प्रोडक्ट आ गया माइनस द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स कॉन्जुगेट ही चल रही है, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स कॉन्जुगेट। नाउ वी नो दैट द सुप्रीमम x belongs to R, x जो है हमारे पास
रियल स्पेस से बिलोंग करता है. x belongs to real space R, and then I write g by x. You know, this is the definition of convex conjugate. If you are confused, then I will also write it like this. See, I think now you understand what I do it here. Okay, now we have you know that when we have to find some critical point or some maximum and minimum, we will first take, and we fix some point, then we will take the derivative of a function like this: dx g yx is equal to y minus ex. We take the derivative of a function. From this we will also take, when we have to find some fixed point, we will, what we do, some critical point, we can take the derivative like this. Okay, and we will take the second derivative of this also, because we will take it first, then we will do something, and it is greater than 0. You know, if the second derivative is smaller than 0, then there exists a maxima, and if it is greater than 0, then there exists if the second derivative is smaller than 0, then there exists minima, and if it is greater than 0, then there exists a maxima. And this allows that the function has at most one critical point. इसका ये मतलब है कि फंक्शन का कोई ना कोई एक क्रिटिकल पॉइंट ज़रूर है. If this function has critical point, then there exists a maxima. अगर इस फंक्शन का कोई क्रिटिकल पॉइंट है, उन्होंने इस बात से तो प्रूव कर दिया कि उसका कोई ना कोई एक क्रिटिकल पॉइंट ज़रूर है. लेकिन अगर इस फंक्शन, उन्होंने अब ये बात कह दी है कि अगर इस फंक्शन का अगर वाकई कोई क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है. If the function has a critical point, then it is a maximum. We have that function admits a critical point x belongs to R if and only if. अब उन्होंने कहा कि फंक्शन का, हमने ज़ाहिर बात है फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव लिया, ठीक है. और मैंने बताया है कि अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट लेना हो तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया जो x बार, जो बिलोंग करता है रियल स्पेस R से. They take some critical point x bar that belongs to the real space R if and only if we will take this derivative equal to 0. Because we have take the x bar, so we will also convert like y minus e x bar is equal to 0. Then how we will, what we do, y is equal to ex bar, and this is called the critical point. And we will also take log on both sides, and then we will get x bar is equal to log y. You know the definitions of log. If we take log on both sides, and if there is an exponential function, then the power of the exponential came here, and we will write log y. Okay, when we take both, I will tell you that if we take log ex, then what is the answer here? X. It's a rule of logarithm, okay, for exponential functions.
दिस इम्प्लाइज ये किस तक कब पॉसिबल था कि जब मैक्सिमा एग्जिस्ट करे. This implies that y is greater than 0. If we will take y smaller than 0, then there is a contradiction. So because logarithm is not a negative one, so we always say y is greater than 0. Okay. Since limit x goes to plus infinity g/x is equal to plus infinity. अब ये किस तरह आ गई है हमारे पास, आप खुद बताइए. when we put in the function, when we have the I will elaborate it. u/x is equal to limit s goes to plus infinity, and we have the function phi x ex. Now how it will came to plus infinity? Yes, it came like when we take when we take here plus infinity and minus e power plus infinity, what happened? Then the answer will e की power plus infinity. Like y/x will be omitted because it's removed, and because the exponential function is more powerful, then when we take out some answer, then we will take the answer of exponential function, because exponential function is more powerful than this function. So the answer will be the exponential function, like minus e plus infinity, then it will take minus infinity. This will become infinity and there is a negative sign. Okay, so the answer is minus infinity. Now first of all we take the limit for plus infinity. Now we will take the limit for minus infinity. When we take minus infinity, the exponential function would be 0, and it came plus infinity when y is smaller than 0, and 0 when y is equal to 0, and minus infinity when y is greater than 0. How it is came? You know that here, look at this definition and put minus infinity here, then plus infinity. Okay, you know when it's ex, we will put x minus infinity, then it become like this, and 1 over infinity is equal to 0. So this means that exponential function goes to 0, and we have only left yx. In yx, when we put y negative and x is also negative, then it become positive, so it's plus infinity. If y is 0, then it becomes 0, minus 0 is equal to 0. And when y is greater than, like if y is positive value and x has negative value, then positive negative becomes negative, so it's become negative infinity. So y is equal to 0. We can make the following conclusion. अब हमारे पास कुछ conclusions हैं जो हमने बना ली हैं. ये हमने convex conjugate अभी निकाला नहीं है, अभी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं पूरा, कि हमने पहले लिमिट ली और माइनस इन्फिनिटी निकाल लिया, फिर लिमिट ली तो ये निकाल लिया. अब हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास if y is smaller than or equal to 0,
then we have that the function has no critical point and is strictly decreasing. तो ये जो है ना फंक्शन, अगर y जो है छोटा हो 0 से तो हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, हमने ये देखा है. एंड इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. किस तरह ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव ले लेते थे फंक्शन का. अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव हमने ऊपर लिया हुआ था, हम इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो क्या आ रहा है ये जी वाई एक्स, ये जो है हमारे पास स्मॉलर देन 0 है. तो इसका मतलब है कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो हमारे पास क्या आ गया, हमने लिमिट पुट की और माइनस इन्फिनिटी डाला फंक्शन में हमने, तो हमारे पास क्या आ गया कि जी कॉन्जुगेट 0 क्या होगा. अगर हम जी कॉन्जुगेट 0 लें तो क्या आएगा 0. एंड इफ वी अटेन, हमने पहले निकाल लिया था कि अगर जी कॉन्जुगेट वाई हो और वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा अगर वाई जो है स्मॉलर देन 0. ठीक है, हमने वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके ना ये निकाल ली है हमारे पास. अब हमारे पास एक सिचुएशन आ गई जब y जो है 0 था, फिर हमारे पास दूसरी सिचुएशन आ गई. अब हम तीसरी सिचुएशन के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास y, if y is greater than 0, then it means that there exists a unique maximum point. We find it before this, and now we will put the value, we know the value of x bar, so we will put in the equation of value of x bar g conjugate y is equal to g y x bar. हमने फंक्शन के इक्वल ले लिया. अब हमने क्या किया है, हमारे पास वो वाई एक्स और वो है ना, मतलब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वाई एक्स बार माइनस लॉग वाई. हम इसमें क्या है एक्स बार की वैल्यू डाल देंगे वाई लॉग वाई, ओके, माइनस लॉग वाई. नाउ वी विल टेक लॉग वाई एज कॉमन. No, we will take y as common. I put here. हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी वाई एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग वाई लॉग एक्स, ये था ना हमारे पास वाई एक्स माइनस ई एक्स था, ये फंक्शन की वैल्यू थी. तो हमने सारी बात है एक्स की वैल्यू एक्स बार और एक्स बाहर कर दिया वैल्यू को. तो हमारे पास ये देखिए, मैं दोबारा से सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा. जी एक्सपोनेंशियल वाई इज इक्वल टू जी वाई एक्स बार. सो हमारे पास क्या वैल्यू है वाई एक्स बार माइनस ई एक्स बार. ओके, ये हमने फंक्शन की वैल्यू लगा दी है. वी राइट the function is like this, and then now I will put the value of x bar is equal to log y in this. Then what we get minus e log y. Okay, now when we take like when we put, we will take y as common. You know that here when it is an exponential function log y, then it is equal to y. Okay, it is like this y log y minus log y, because it's a definition of exponential function. No, it's equal to y.
when it is given like this. Okay, then we will get y log y minus y, and we will take y as common. We will get 1. Okay, now we get g conjugate y is equal to this when y is greater than 0. हमने सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है और हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया है. तो ये था आज का मेरा टॉपिक. I think you will understand it properly, that we do every step, and we fulfill our conditions. Now I will give you some example and you will solve it, and next time, and you will tell me in the comments that how you like these topics. And I am giving you some two examples. You can solve it and tell me if you have any difficulty. I will help you in the next videos if you tell me in the comments. Otherwise I will change my topic and I will go further. Okay, bye bye. Please share, like and subscribe my videos if you like it, and please remember me in your prayers. अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है. तो अल्लाह हाफिज़ and arrivederci in Italian. And I do not know Italian so much, but buonasera. Cosa che italiano un po' ma apprenda. I am learning Italian language also, and I think that inshallah in future I will explain things also in Italian. Now for this time I am only explaining things in English and in Urdu. I explain things in Urdu because I have some Pakistani friends also, and they are also watching these videos because they told me that please tell us what are you studying, and we also wanted to study those topics, so it will be helpful in our future. Okay, bye bye. Thank you. Allah Hafiz.